हैं कि पता नहीं आप लोगों ने साइकिल चलाना कैसे सीखा था, पर इफ यू रिमेम्बर, तो आप लोगों को जब साइकिल चलाने के लिए किसी सीनियर ने बताया तो 4 चीजें बताई होंगी, हैंडल ऐसे पकड़ना है, सामने की तरफ देखना है, एंड ब्ला ब्ला। बट आज जब आप साइकिल चलाते हैं तो डू यू एक्चुअली डू ऑल दिस थिंग? Actually, you do, but you don't do it consciously, right? That is how it works with the interviewers also. Yes, there is a checklist, there is a things we prepare ourselves, but when it comes to us actually performing in the board, then it comes natural. What is my way of doing it? I can tell you. मेरा बहुत आसान तरीका है, बहुत मुश्किल नहीं. But since I'm a teacher of literature, I've been into this interview thing for 2 decades. What I do is that I look at the DAF. DAF is detailed application form. All of you must be. जब आप यूपीएससी में जाते हैं तो आप यूपीएससी में एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं. ठीक है, ये 2 पार्ट्स में होता है. एक पार्ट तो जनरल होता है जिसे आप शुरुआत में भरते हैं. जब आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो आपको फिर डैफ 2 भरने का भी मौका मिलता है, और डैफ 1 और डैफ 2 मिलकर आप लोगों का डैफ कहलाता है. Or we are served with your DAF initially before the candidates walk in. And to me, I'm telling you my way. To me, every DAF is a story, right? Every DAF is a story, which effectively means that the person who is walking in is the character of this entire story. आप उसको अगर आप बहुत केयरफुली पढ़ें तो you'll be able to. I cannot share DAF right now because it is inappropriate and unethical, but I do have many DAFs with me right now. तो अगर आप उन DAF को देखें तो वो व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ, उसके माता पिता क्या करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में था, किस स्कूल में था. अब ये these are small pieces of information, but if you read them collectively, you're actually reading a story, right? And I read that DAF as a story. And then the person who walks in is like a character too. Now I already know. In fact, most of the time we ask questions are not for the information we are seeking. Very rarely, and in fact, a very dumb interviewer asks questions for the information, right? If I ask you X, Y, Z information about from your district, idea is not to find some information about your district. We may already have that information, or that information may not be useful at all. So that's why I've been in the feedback I've been giving this suggestion to the candidates that please, before you attempt a question, please ask 2 questions to yourself. One question is whether you know the answer or not, whether you have this information or not, and it is a secondary. Most important thing is please ask yourself that why this question is being asked to you. Right? Not what is the question. What is the question is an easier question to answer. But why this question is being asked? So what preparation we do? We actually have certain ways of asking a few questions on the basis of which we can test certain personality traits. As a matter of fact, more than your ability to give answer, जनरली आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जिन चीजों से पता लगता है वो हिस्से हैं जिनके उत्तर आप नहीं दे. वे जनरली वे एरियाज हैं जिनसे पता लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या. तो जैसा मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक के केस में जब आपको कविता पढ़ाई जाती है, जब आपको कोई पर्यावरण का निबंध पढ़ाया जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन देना उद्देश्य नहीं है, उसके बहाने हिंदी पढ़ाना या उसके बहाने अंग्रेजी पढ़ाना उद्देश्य है. ठीक वैसे जब हम सवाल पूछते हैं तो सवाल सेकेंडरी चीज है, उनके उत्तर भी सेकेंडरी चीज है. उनसे आपकी पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स पता लगते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण, और हम लोग उन पे फोकस करते हैं. मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ? मैं डेफ को क्लोजली पढ़ता हूँ और उससे उसका जो कैरेक्टर निकल कर आ रहा है, उसमें जो समस्याएं मुझे डाउटफुल एरियाज लगते हैं उसके कैरेक्टर को लेकर, उसकी इंटेग्रिटी को लेकर, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को लेकर, या उसके एप्टीट्यूड या एटीट्यूड को लेकर, मैं फिर उन पर सवाल. अगर मेरे आप सवालों को क्लोजली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप हर सवाल के बारे में पूछ सकते हैं कि ये व्यक्ति ये सवाल क्यों पूछ रहा है, और तब आपको समझ में आएगा कि शायद इससे पर्सनालिटी का कोई ट्रेट उजागर होने वाला है जिसकी वजह से ये सवाल दिया जा रहा है. And that is how we prepare. We read those DAFs very closely, and on the basis of that we figure out कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी की गांठें कौन-कौन सी, किस जगह पर इस व्यक्ति की पर्सनालिटी में ग्रंथियां हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, and then we try to unwind those complexes, और उससे उसकी पर्सनालिटी निकल कर आ जाती है.
It applies to very privileged people. It applies to very underprivileged people. It applies to men, women, and others. So that is how I do it. Thank you for the answer, sir. A participant named Harish has raised his hand. I call upon Harish to please ask his question. Harish, please come forward with your question. Yes, Harish, you need to unmute yourself so that you can ask the question. Okay, seems like there is some problem at his end. Moving on to the next question. Sharon, please come forward with your question. Sharon. Maybe there's network issue. I'd like to ask the question that Sharon wrote in the chat box. Yes. So, sir, Sharon asks, what are the key factors that play a major role in an interview, like our hobbies or optional, etc., show any influence in the interview? See, what I've been saying is, I've been advising it in the feedback session also, that honestly speaking, there is no syllabus of any personality.